ओके, जो भी डाउट है तुम पूछ सकते हो। आर्यन शेट्टी, गुड आफ्टरनून। Gatsu sir, you can start now. स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट टेस्ट कौन सा मालूम है ना? स्ट्रेट लाइन। हिरेन सर। यस सर। हाँ चिराग सर। हाँ, टॉपिक एक्सरसाइज नंबर बताया ना इनको? क्या बोल रहे हो सर? एक्सरसाइज का नंबर भी बताया ना उनको, स्ट्रेट लाइन का? वो सर ने बोला था 25 तक, मैं सर को पूछ के बताता हूँ सर। हाँ सर, मैं व्हाट्सएप पे डाल देते हम लोग। स्लोप तक बोला था सर ने, लाइन ऑफ स्लोप सर। ओके ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4? सर हम चालू कर सकते हैं लेक्चर के बाद हाँ, उनका हाँ। डाउट लिस्ट। मानसी, कुठला क्वेश्चन होता 4 मध्ये? मानसी सर CH3 डैश CH3 CH3 डैश CH2 डैश O डैश CH3। ओके। ये कौन सा क्वेश्चन? CH3 CH2 O CH3, बराबर? हाथ से बता क्वेश्चन। यस सर। हाँ, so first you have to identify which is the functional group. तो O है, O is the functional group of ether. O is the functional group of ether, and pattern of ether is alkoxy alkane. Pattern of ether is alkoxy alkane. The smaller alkyl group is called as alkoxy. और जो ज्यादा नंबर कार्बन एटम है that goes for alkane. तो ये 1 कार्बन एटम है तो कम है, लेस। ये 2 है तो ज्यादा। जो कम है that will form alkoxy, जो ज्यादा है वो alkane. So 1 carbon is called as methoxyethane. arranged in this pattern. So it becomes methoxy. methoxyethane. methoxy हो गया ये methoxy ना। अल्केन में ये 2 कार्बन डाउन, 2 कार्बन E, so pattern becomes ethane, so name becomes methoxyethane. And if you want to draw the bond line, 2 कार्बन atoms, एक आणि 2 आणि सेकंड कार्बन के O, फिर वापस एक कार्बन। क्लियर मानसी? सर वो मिथॉक्सीएथेन का इथेन का रिपीट कीजिए। काय? मिथॉक्सीएथेन। हाँ तो रिपीट करा ना। हाँ, तो इथॉक्सीएथेन रॉन्ग आएगा, मिथॉक्सीएथेन राइट है। हाँ, तेज रिपीट करा ना। इथॉक्सीएथेन चाहिए स्ट्रक्चर आपको। तो इथॉक्सीएथेन कैसे ड्रॉ करेंगे? ईथ ऑक्सी, ईथ मतलब 2 कार्बन एटम, ईथ मतलब 2 कार्बन एटम, फिर ऑक्सी मतलब O, ईथ म्हणजे 2 कार्बन, ऑक्सी मतलब O, और वापस ईथ तो वापस 2 कार्बन एटम आणि एन म्हणजे सिंगल बॉन्ड। सबकी बैलेंसेस बैलेंस करो। क्लियर आता? यस सर, डन सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आणि जर याचा आयपी अनिलियस असेल, बॉन्ड लाइन कसा येणार? 1 कार्बन 2 कार्बन ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 कार्बन ऑक्सीजन, असं बॉन्ड लाइन। इसका बॉन्ड लाइन, इसका बॉन्ड लाइन। So today we will be moving to the bond fission topic. So before I explain bond fission, हम कुछ टॉपिक्स पहले इसके पैरामीटर्स देख लेते हैं। So bond का मीनिंग होता है when two atoms are linked to each other. When two
are linked to each other, then the linked part is called as a bond. वो किसकी वजह से लिंक है? तो जो दोनों को लिंक करवाता है, दोनों को जॉइन करवाता है, दोनों को मिलाता है, उसे हम बॉन्ड बोलेंगे। तो ये बॉन्ड अलग-अलग टाइप की होती है। We are going to study the type is covalent bond. Covalent bond. Covalent bond का मीनिंग होता है bond sharing of electrons. Sir, mic. Sir, your mic. the bond which is formed by sharing of electrons is called as covalent bond. Okay, the bond which is formed by sharing of electrons is called as covalent bond. एक, ठीक है, ये हो गया। अब ये बॉन्ड को, अगर ये बॉन्ड है, हम इसको ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक को हम इसको ब्रेक करते हैं। सो ब्रेक को हम बोल सकते हैं क्लीवेज और आल्सो कॉल्ड एज फिशन। ब्रेक करने को दूसरे मीनिंग्स क्या है? फिशन, और यू कैन यूज द वर्ड क्लीवेज। क्लीवेज एंड फिशन यू कैन यूज द वर्ड फॉर ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग। हो गया ना? फर्दर polar. Polar means what? The molecule which is having positive as well as negative charge. जैसे वाटर ले लेते हैं H2O, तो H plus and OH minus, H plus and OH minus. So molecule having positive as well as negative charge present in it, such molecules are called as polar in nature. तो जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेबल है, सेपरेट किए जा सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर बोलेंगे। जिसमें पॉजिटिव सेपरेट नहीं होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्लोरीन ले लिया तो ClCl, बोथ आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें प्लस और माइनस चार्ज नहीं सेपरेशन है, then such molecules are called as non-polar molecule. This is polar, this is non-polar. ठीक है ना? So these are some things you have to understand. So let us go for the topic that is called as bond fission. So bond fission का मीनिंग अभी बता दिया आपको मैंने। Cleavage का मीनिंग ब्रेकिंग। Cleavage of a covalent bond. Cleavage of a covalent bond is called as bond fission. Cleavage of a covalent bond is called as bond fission. They are of two types: homolytic fission, and second is heterolytic fission. There are two types of bond fission: homolytic bond fission and heterolytic bond fission. अब होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक में फर्क क्या है देखते हैं। Homolytic fission and heterolytic bond fission. When you having a carbon, when you take A and B, A और B के बीच में एक बॉन्ड लेते हैं, और यहाँ पर भी A और B के बीच में बॉन्ड लेते हैं, ठीक है? इसका फिशन करते हैं, and both the species takes a single electron. दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा एक ही स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गए। When you having A and B bond, one bond, एक बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दिखा है, which means one bond. अब यहाँ पर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने की वजह से क्या होगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, so both are taking equal number of electrons. As both are taking equal number of electrons, तो दोनों के पास सेम है, सेम, इसलिए इसको क्या बोला गया है?
होमोलिटिक फिशन। यहां पर दो एक बॉन्ड है, but out of that one species takes the shared pair of electrons. One species takes the shared pair of electrons, then such is called as heterolytic fission. हेटेरोलिटिक फिशन, ठीक है। तो दोनों बॉन्ड तो सेम था, फर्क क्यों हुआ? बिकॉज दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, सनलाइट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। यूवी लाइट, सनलाइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस। एंड दिस रिएक्शन इज कैरीड आउट in presence of polar solvent, ठीक है। This is carried out in presence of polar solvent. This is carried out in presence of UV light, sunlight, high temperature और catalyst like hydrogen peroxide और non polar solvent। तो मतलब यहां पर दोनों को सेम मिला ना, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? The symmetrical cleavage of a covalent bond. The symmetrical cleavage of a covalent bond is called as homolytic fission. यहां पर दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, तो इसलिए यहां पर आ जाएगा unsymmetrical cleavage of a covalent bond is called as heterolytic fission, ठीक है। अब दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है तो कोई चार्ज नहीं आएगा, so these pieces are called as free radicals। so second point क्या हो जाएगा कि homolytic fission results in formation of free radicals, बट यहां पर एक स्पीसीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके गया है, इसके लिए उसके पास माइनस चार्ज, सो दूसरे के पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। एक के पास माइनस चार्ज, दूसरे के पास प्लस चार्ज, एंड हेंस सच आर कॉल्ड एज चार्ज्ड रेडिकल्स या चार्ज स्पीसीज। So homolytic fission generates free radicals, heterolytic fission produces charged species. As they are free radicals, they are short-lived, highly reactive in nature. फटाफट किसी के साथ भी combine हो जाएंगे। They are short-lived, highly reactive in nature. These species are long-lived and less reactive in nature. प्लस वाला सिर्फ माइनस के साथ ही रिएक्ट करेगा, बाकी किसी के साथ नहीं, और ये माइनस वाला सिर्फ प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। पर इधर जो है चार्जलेस है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस न्यूट्रल। Hence, they are highly reactive species, they are less reactive species. Short-lived, long-lived. Then, shifting of electron is shown by half-curved arrow. Shifting of electron is shown by half-curved arrow. It is also called fish hook arrow. And यहाँ पर shifting of electron is shown by half curve complete arrow. Half curve complete arrow. Okay. Then here. Okay. यहाँ पर the more electronegative species, takes the shared pair of electrons, ठीक है क्या? More electronegative species takes the shared pair of electrons. तो इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, शेयर पेयर, इसलिए माइनस चार्ज। यहाँ पर नहीं। This reaction is also called as free radical reaction or homolysis. This reaction is called as
This reaction is also called as heterolysis or charged ion reaction or polar reaction. Let us see an example. If I have CH3CH3 cleavage, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा CH3 CH3. They are called as methyl free radicals. Methyl free radicals. If I take the example here, CH3 Cl. ये next reaction का reaction है Daniel coefficients. मैं नाम WhatsApp करता हूँ. दोनों को कॉल कर देना. उनका टाइमिंग रहेगा 2:32. ये सारे चल रहा है. कैसे दिन की है जाएगा. नया reaction ना भी So यहाँ पर CH3Cl है and the reaction takes place in presence of polar solvent. अब इसमें से Cl is more electronegative. Cl is more electronegative. इसलिए ये species of electron Cl लेके जाएगा. Cl is more electronegative. तो इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3 plus Cl. तो Cl ने electrons ले लिया. So Cl gains a minus charge and CH3 is a plus charge. So it forms a ions. Charged particles are also called as ions. So getting everybody understood how homolytic and heterolytic fission takes place? Yes, sir. Why it takes place? Yes, sir. Yes, sir. So this I have sent you written in the notes. So this is the difference between homolytic and heterolytic fission. Very easy topic. Next topic. If there is a covalent bond between carbon-carbon atom and heterolytic fission takes place, heterolytic, that is presence of UV light, that is presence of polar solvent, then what will happen? One of the species, one of the carbon will take the shared pair of electrons. So it will form C plus and C minus. Carbon atom carrying plus charge is called as carbocation. And carbon atom carrying minus charge is called as carbanion. Carbon atom carrying plus charge is called as carbocation. And carbon atom carrying minus charge is called as carbanion. Again I repeat. When you have the covalent bond between carbon-carbon, then cleavage of this bond takes place in presence of polar solvent, due to which it forms two ions, carbon with a plus charge and carbon with a minus charge. Carbon with a plus charge is called as carbocation and carbon with minus charge is called as carbanion. Carbocation and carbanion. So carbon with a plus charge is called as carbocation and carbon with a minus charge is called as carbanion. Now we are familiar कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 बॉन्ड्स मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स. बट यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया इसलिए इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन हो गया and having 6 electrons in valence shell.
So it shows sextet. This कार्बोकेटायन इसका एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके चले जाता है ये, इसके इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन्स and form sextet. They are having 8 electrons in valence shell. Hence they forms octet. ये octet बनाएंगे. तो 6 है, यहाँ पर 8 है, ज्यादा है कम है, कम है, therefore they are electron deficient. ज्यादा है इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच. डेफिशिएंट का मतलब कमी, लेस, लेस है इसलिए क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे. therefore they are electron acceptors. they are electron rich, पैसे वाला ना, ज्यादा है तो इसलिए क्या करेंगे, they are electron donors. Electron acceptors, therefore they are Lewis acid. Electron donors, therefore they are Lewis base. तो definition क्या Lewis acid का, the species which are electron acceptors are called as Lewis acid. And the species which are electron donors are called Lewis base. मतलब पहले ऐसे डेफिनेशन था ना, H प्लस आयंस होता है तो एसिड, OH माइनस तो बेस. तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, जैसे अमोनिया ले लिया अपन ने, इसके पास ना H प्लस आयंस है ना OH माइनस आयंस है, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स का थ्योरी यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लुईस बेस. As they are electron acceptors, they are Lewis acid and Lewis base. Clear this much, everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third topic now, reagent. Reagent. Reagent are the attacking species. Reagent are what? The attacking species are called as reagent. और जिसपे अटैक करते हैं, they are substrate. जिसपे अटैक होता है वो substrate, और जो अटैक करता है वो reagent. The attacking species are called as reagent. They are of two types, electrophile and nucleophile. Word itself explains, meaning electro comes from the word electron. Phile comes from the word loving. So they are electron loving species. यहाँ पर nucleo comes from the word nucleons. Phile means loving. So they are nucleons loving and they are electron loving. Electron loving species are called as electrophiles. Nucleus loving species are called as nucleophiles. As they are electron loving, हम किसको लव करते हैं? जो चीज हमारे पास नहीं होती है, जो चीज हमारे पास नहीं होती है उसको हम लव करते हैं. तो नहीं है इसका मतलब उनकी कमी है, कमी मतलब deficiency. They are electron deficient. तो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, they are electron rich. इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. They are having less electrons, so electron deficient. More electrons, so they are electron rich.
electron diffusion, so they will Electron accept exchange. electrons. ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए they are electron donors. donors. They are electron donors. Electron diffusion, electron rich. Diffusion है तो acceptors, rich है तो donors. Okay. As this speaks the electron acceptors, they are Lewis acid. And they are electron donors, so they are Lewis base. सर लुईस Electron एसिड और लुईस acceptor बेस क्या होते हैं? will attack. So they attack on electron rich centers. जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर ही अटैक करेंगे ना, या इलेक्ट्रॉन लवर्स, इससे इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा होंगे वहां पर अटैक करेंगे. So of course they attack on इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन सेंटर्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, मतलब न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे. इलेक्ट्रॉन्स कम मतलब न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होंगे ना, वहां पर अटैक करेंगे. इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब माइनस चार्ज वाले स्पीसीज चाहिए, तो इनका चार्ज कौन सा होगा? प्लस चार्ज. पॉजिटिव और न्यूट्रल. इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? माइनस चार्ज. तो माइनस चार्ज को लव करते हैं, इसका मतलब इनका चार्ज कौन सा है? प्लस चार्ज. तो दे आर पॉजिटिव और न्यूट्रल. तो यहां पर दे आर नेगेटिव और न्यूट्रल. पॉजिटिव वाले आएंगे NO2 प्लस, NO प्लस, AlCl3, BF3, ये सब आ गया इसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन. और इलेक्ट्रॉन रिच में आ जाएगा OH माइनस, Cn माइनस, अमोनिया, H2O. वाटर. बराबर है, ये सब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिच में, सब आ जाएंगे न्यूक्लियोफाइल्स. So please see 2 minutes, then we move further. तो 3 टॉपिक अपन ने कवर किया है इसमें. Okay, so 3 topics we covered today. First was bond fission, second was carbocation, carbon ion, third was what? Reagent. Now fourth, I'll move to the next topic, that is called as inductive effect. या फिर आइसोमेरिज्म ले लेते हैं, आइसोमेरिज्म लेते हैं इसी टॉपिक. We'll take the topic isomerism. We are familiar with the isomers, compounds having same molecular formula but different structural formula are called as isomers. Compounds having same molecular formula but different structural formula are called as isomers, and the property exhibited by them is called as isomerism. There are 2 types of isomerism: stereoisomerism and structural isomerism. तो पहले हम स्टीरियो की तरफ चलते हैं, तो पायल बेसल का डाउट भी क्लियर हो जाएगा. So first I'll go with there are 2 types of isomerism. First is
स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज स्टीरियो? स्टीरियो का मतलब होता है वो याद रखने का, शाहरुख खान का स्टेप। शाहरुख खान ने उसे बताया था वो गाने में रावण, ये तू है मेरी चमक छल्लो चमक चलो। चल्लो चल्लो, वो चम्मच ऐसे ऐसे चल्लो। करता है ना, तो बस ये, अरे वो सीआईडी में भी करता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, बस यही वाला याद रखने का। तो ऐसे 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 सीसीटी ऐसे घूमता है, प्रद्युमन घूमने वाले को हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमर, और कुछ भी नहीं है। तो जो अलग अलग दिशा में घूमता है, तो मैं ऐसे खड़ा रहता हूं सामने, तो आपको मेरा फ्रंट फेस दिखता है, ऐसे खड़ा रहूंगा साइड फेस दिखेगा। तो जैसे वो होता है ना, हमने पहले जो मैंने देखा है, वो एक बोलता है सर इसको मुच्छी है, और उधर वाला देखा उसको मुच्छी नहीं है, सामने वाला कुछ और बोलेगा, तो तीनों का कंक्लूजन अलग अलग आएगा ना, बिकॉज तीनों का व्यू अलग है। किसी ने फ्रंट व्यू दिखा, किसी ने साइड व्यू देखा, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द व्यू, difference in the position, these isomers arise, and such isomers are called as stereoisomers. सीधी बात, the stereoisomers are isomers which arise due to spatial arrangement of atoms. Spatial arrangement of atom, तो spatial का मतलब होता है particular या different arrangement, मतलब वही चीज है उसको घुमा फिरा के अरेंज करना है। सुपर उदाहरण है, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर में आप एंट्री मारते हो, तो जैसे एंट्री मारा, हॉल होता है, हॉल में सामने सोफा है, और जो दरवाजे की दीवार है उधर टीवी है, दरवाजे की दीवार है उधर टीवी है, टीवी के सामने सोफा है, और राइट हैंड साइड में ये कुछ है, वॉल पीस लगाया हुआ है मम्मी ने वॉल पर। अब दिवाली की सफाई कर रही है मम्मी ने, तो मम्मी को कुछ सूझा, कुछ चेंज कर लेते हैं। तो मम्मी ने क्या किया, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा सोफा रखा है, और टीवी इधर से उठा के इधर कनेक्शन कर दिया मम्मी ने, और वॉल पीस गायब भी कर दिया है, या वॉल पीस इस वाले दीवार पे रखा है। तो मतलब चीजें वही है पर रीअरेंज किया है। तो आप आओगे एंट्री मारोगे घर में, मम्मी आज घर काहीतरी वेगळं दिसते, आपलं घर आहे ना आज मोठं दिसते आपल्याला, अरे आई बोलणार कसं मोठं दिसणार, भिंत काय सरकते का, दीवार सरकती है क्या, नहीं सरक रही है, तो उतना ही है, नहीं पर मम्मी घर तो बड़ा दिख रहा है, कुछ तो अलग लग रहा है। तो फिर मम्मी बताती है, हाँ आज मैंने सफाई की ना, तो मैंने आज सोफा वगैरह थोड़ा रीअरेंज कर दिया, इधर कर दिया, तो लुक अलग आ रही है। तो ऐसा होता है, तो लुक अलग आ जाती है, बस उसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो बस यहाँ पर वही है, we have to change the look. So let us see what are stereoisomers. So stereoisomers are what? I'll read the definition for you if you want. So phenomena in which two or more compounds having same molecular formula, but due to spatial arrangement of atoms, they form different structures. Such are called as stereoisomers, and the property is called as stereoisomerism. So in that first we'll see Newman's projection formula. Sir, definition again. क्या हुआ? Repeat the definition. Definition. धीरे धीरे बोलो सर। ठीक है। Phenomena in which I'll repeat the compounds having same molecular formula, but differ in the spatial arrangement. SPATIAL, spatial arrangement. सर एक बार रिपीट करना। सो रहा है क्या मीत? हाँ सर आप पास। और है ना मीत सब नोट्स पे लिख के दिया मैंने, नोट्स को फॉरवर्ड किया आप लोग को, वापस बोलता हूँ फिर भी क्या वापस बोल रहा हूँ, the compounds having same molecular formula, but differ in the spatial
spatial arrangement of atoms, spatial arrangement of atoms or a group of atoms are called stereoisomers, and the property is called stereoisomerism. And the property is called stereoisomerism. ठीक है? Yes, sir. So now we'll go with the first part of that. In that we'll see Newman's projection formula. Newman's projection formula. तो हम एग्जांपल है C2H6 ईथेन का. We'll take example of C2H6 ethane. तो C2H6 can be written in this way, CH3 ऐसे लिख सकते हैं. बराबर है. अब ये तो सिंपल है. तो इसमें क्या नया कारनामा किया, इसमें ऐसे लिखा. ये फॉर्मूला से पहले ना B वाला फॉर्मूला दिखाते हैं और B वाला फॉर्मूला दिखाते हैं हम लोग. That is called as Sawhorse projection formula. B formula we'll see, and B formula is Sawhorse projection formula. So C2H6 ethane, CH3, CH3. So how did he arrange this? He said that the carbon atom को ऐसे रखो यहाँ पर, and then CHH. Three H atoms. Okay. Also, मतलब यहाँ पर all the three H at equal distance from each other. अगर ऐसे रखा है इसको वापस कार्बन, बट इनको देखो ये H ऐसे नजदीक कर दिया, improper arrangement कर दिया. Then there is a difference between two structures. When all the H are at equal distance from each other, then the structure is stable, and hence it is called as staggered conformation. और यहाँ पर unequal position पर है, that is called as eclipsed, ECLIPSED. तो इनके आइसोमर्स को हम बोलते हैं conformation. So it's called as staggered conformation. इसे बोलेंगे eclipsed. Staggered में क्या होता है? All the hydrogen atoms are at equal distance from each other. मतलब इनका distance proper आएगा, equal. That's why this is stable. और याद रखना, stag मतलब stable, staggered का stag मतलब stable. तो ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा? Less stable या unstable. So eclipsed conformation means the hydrogen atoms are very near to each other or are not at equal distance. तो मैंने ये क्यों बताया आपको पहले? Because look, if I keep my eye here, मैं इधर अपनी आंख रखता हूँ ऐसे, और मैं ऐसे देखूंगा ना आंख रख के ऐसे, तो मुझे ये कार्बन दिखेगा पर ये पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा. What I'm trying to explain, understand? If I keep my eyes here and look here, I can see the front carbon, but behind वाला कार्बन नहीं दिखेगा मुझे, because they are linear to each other. They are in a streamline.
सिंपल एग्जांपल है, आप स्कूल में मास पीटी के वक्त खड़े होते हो, मास पीटी के वक्त खड़े होते हो, तो मास पीटी में कैसे करते हैं, जिसका हाइट कम होता है उसको ऐसे आगे खड़े करते हैं, बड़ा हाइट वाला पीछे खड़ा रहता है, तो वो टीचर जो आगे खड़ा रहेगा उसको सब दिखता है। पर अगर 3-4 बच्चे 8-10 बच्चे सेम लाइन वाले हैं और एक के पीछे किसे खड़ा कर दिया स्ट्रेट लाइन में, तो आगे वाला दिखेगा पर पीछे वाला दिखा ही नहीं रहा है, पीछे वाला दिख नहीं रहा है क्योंकि क्या, पीछे वाला सेम उसे कवर हो गया है स्ट्रेट लाइन में, लीनियर लाइन में। अगर हम थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो दिखेंगे। हाँ, आपका डेली लाइफ का एग्जांपल, आप सेल्फी लेते हो, आप 8-10 दोस्त हो साथ में और सेल्फी लेते हो और सब ऐसे, मेरे पीछे कोई खड़ा है और इधर बाकी सब खड़े हैं, तो हम बोलते हैं अरे तू दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्यों दिखाई दे रहा है, वो जस्ट मेरे पीछे है, लीनियर में है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा इधर सरक, तो आ जा और हमको दिखेगा वो सेल्फी में। So when the objects are in a linear position, now you understanding, they are not visible. तो इसलिए यहाँ पर भी सेम ऐसे हो गया, if I keep my eye here, they are in a straight line, तो मुझे पीछे वाला कार्बन नहीं दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर सोचकर न्यूमैन ने ड्रॉ किया। तो न्यूमैन ने कैसा स्ट्रक्चर बताया यहाँ पर, उसने क्या बोला, उसको आगे का कार्बन दिखा और तीनों हाइड्रोजन भी दिखे क्लियरली, तो ये ड्रॉ कर दिया, पर पीछे का कार्बन नहीं दिखा, तो उसने क्या बोला कि पीछे का कार्बन नहीं दिख रहा है और 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो उसने 3 हाइड्रोजन से ड्रॉ कर दिए। इसका मतलब क्या हो गया, दिस बिकम्स द फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू, आगे का कार्बन, और पीछे का कार्बन कैसे हो गया, पीछे कार्बन नहीं दिख रहा है पर उसके साथ में आने वाला हाइड्रोजन दिख रहा है, तो उसे बोलेंगे रेयर व्यू। सो पीछे का कार्बन दिख रहा है तो रेयर व्यू, आगे का दिख रहा है तो फ्रंट व्यू। इज इट क्लियर टू यू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Payal, Yes. Payal, especially I want Payal. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Meet, Parth, Yash, Yes, sir. Nimisha. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो हमको क्या दिखा, ये। अभी इसको मैं क्या करूंगा, जैसे बोला तू है मेरी चमक चलो, तो मैं इसको चमक चलो मतलब वो कायकरी गड़बड़ है, तो मैं इसको रोटेट करते जाऊंगा। अभी हम इसको भी रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा देखते हैं। अब रोटेट करेंगे तो H नजदीक जाएगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट एट इक्वल डिस्टेंस, दे आर वेरी नियर टू ईच अदर। सो है वो रेयर व्यू ही पीछे वाला ही, बट यहाँ पर हाइड्रोजन एट इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर हाइड्रोजन वेरी नियर टू ईच अदर, and when they are equal distance they are stable and is called as staggered conformation, and when they are very near to each other that is called as eclipse conformation. So staggered is stable, eclipse is least stable क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स आर वेरी नियर टू ईच अदर। अब जो टेक्स्ट बुक में नहीं है उसके अलावा बात between staggered and eclipse, between staggered and eclipse, what between staggered and eclipsed there are number of conformation which are called as skew, and they are infinite. क्या स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अनगिनत है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे, इन स्क्यू कंफर्मेशन। सो का उदाहरण है फ्रॉम अ फुल मून डे टू द न्यू मून डे,
from a full moon day to new moon day, the moon goes on decaying day by day or decreasing day by day. तो छोटा हो जाता है, तो हमें पता है कि 15 ही दिन है, 15 होने वाले हैं, और तिथि बढ़ गई तो 16 हो सकता है, तो 15 से 16 होता है यहाँ पर। बट यहाँ से स्टैगर्ड से लेकर एक्लिप्स तक वो जो स्ट्रक्चर्स चेंज होते जाते हैं, वो कितने हैं? इनफाइनाइट, कितने भी स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। और उसको हम मून वाले को इंग्लिश में बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में इनके क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फर्मेशंस। सो दिस different structures between staggered and eclipse are called as skew conformations, and they are infinite in numbers. So out of which staggered conformation, पहले staggered फिर eclipse फिर I'm sorry पहले staggered फिर skew फिर eclipse, पहले staggered फिर skew फिर eclipse. So order of stability decreases, मतलब the most stable staggered, उसके बाद skew और सबसे कम stable eclipse. So order of stability decreases from staggered to eclipse. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. तो ये आपका हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक। So there is a Fisher projection formula. Fisher projection formula. Fisher projection formula. What did Fisher say? Fisher say कि there is a horizontal line and there is a vertical line. There is a horizontal and vertical line. Where this line intersect, that is called as a chiral carbon. The line of intersection, yes, the point of intersection of horizontal and vertical line is called as chiral carbon. Chiral carbon means what? A carbon attached to 4 different atoms or group of atoms. Chiral carbon is a carbon which is attached to 4 different atoms or a group of atoms is called as chiral carbon. So, if I take CH3, C, COOH, H and OH. So here, so carbon atom is a tetravalent. Its 4 valencies are satisfied by 4 different atoms or a group of atoms, and hence this is called as chiral carbon. So अगर ये स्ट्रक्चर इस भाषा में दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे। तो ये बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो जाता है आपका कायरल कार्बन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो कायरल कार्बन। अब यहाँ पर CH3 ऊपर लिखूंगा मैं, इधर COOH, इधर OH और यहाँ पर H। अगर मेरे पास 2 ऐसे बॉन्ड, 2 लाइन है, इसका मतलब कायरल कार्बन कितने हो गए? यहाँ पर 2 कायरल कार्बन। तो जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उतना कायरल कार्बन एटम। तो ये हमको बताया। तो horizontal line and vertical line when intersect each other, they cross each other, and the formula which is represented is called as Fisher projection formula. It's called as Fisher projection formula. ठीक है? तो इसमें Sir, mic.
ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। So we had seen that carbon atom is attached to 4 different atoms. So that can be represented by this way also. So this bonds are also called as wedges. Bonds are also called wedges. So writing the structure in this style is called as wedge formula. मतलब ये फॉर्मूला यही है, बट इसको बॉन्ड्स दिखाया हमने प्रॉपर्ली कि कौन सा बॉन्ड किधर है. So showing this is called as wedge formula because bonds are also called as wedge. ये डार्कर लाइन है, it shows it is in the front of plane. ये dotted line है, it is behind the plane, and it's a normal wedges. They are with the plane. So this structure is 3D, three-dimensional view. Sir, mic is Gatsu sir. Understood, students? This wedge formula. So this is what? Front view. This is rear. Rear मतलब पीछे का. Back view. This is side view. So three-dimensional view है इसलिए. मतलब ये फॉर्मूला हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक हो गया वेज फॉर्मूला और एक हो गया फिशर फॉर्मूला. तो फिशर said that there is a vertical and a horizontal line. So that also we can show and we can show this. तो फिर लेटर क्या कर सकते हैं, ये इसमें डाल सकते हैं फॉर्मूला, मतलब ये यहाँ अगर ये फॉर्मूला इसमें डालना है तो हम डाल सकते हैं. ऐसा भी लिख सकते हैं इसको. हो गया ये फॉर्मूला ये ऐसा. तो ये फिशर और वेज दोनों साथ में कंबाइन. क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आता है स्टीरियो आइसोमर्स में, वही आता है न्यूमैन्स एंड दिस वन. ये भी आता है उसमें. सो नाउ वी गो फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. नाउ वी गो फॉर टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. Compounds having same molecular formula But different structures of formula. Compounds having same molecular formula but different structural formula are called as structural isomers. Compounds having same molecular formula but different structural formula are called as structural isomers. Depending, they are further classified into 5 parts. First is chain isomers. First is chain isomers. तो chain isomers में क्या होता है,
So both are having same number of carbon atom, but here in the straight chain there are 4 carbon atoms. Here in the straight chain there are only 3 and one is branched. यहाँ पर straight chain में 4 कार्बन, यहाँ पर straight chain में 3 है और एक branching में है, and hence they are called as chain isomers. So what? When the skeleton, इसको skeleton भी बोल सकते हैं, when the skeleton of the carbon is changed, then it is called as chain isomers. If the skeleton word hard लगता है तो हम बोल सकते हैं when the length of carbon chain differs, then such isomers is also called as chain isomers. In the straight chain there are 4 carbon atoms, in the straight chain there are 3 carbon atoms, and hence called as chain isomers. Name of this compound is butane, that is 2-methyl propane. Though the number of carbon atom remains the same, but the number of carbon atom in the straight chain changes, and hence such isomers are called as isomers. Sir, it is isobutane. Position isomer. नाम से पता चल जाता है पोजीशन चेंज होने वाली है, नाम से पता चल जाता है पोजीशन चेंज होने वाली है. C4H8, same molecular formula but different. Yes, मानसी गायकवाड. फरक काय दोघांमध्ये बघ आणि सांग उत्तर. मानसी गायकवाड. मानसी आदित्य सालुंखे है क्या? आदित्य सालुंखे. सर आई कैन गिव. हाँ बोल, मैं तू ही बोल ले चल. सर वो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है शायद से उसमें. क्या पहले change? वाला वो डबल बॉन्ड है ना, उसकी हाँ. पोजीशन चेंज है. और कहाँ पर चेंज है, कैसे चेंज है बताओ ना, एक्सप्लेन करो आगे. बराबर है. फर्स्ट स्ट्रक्चर में कहाँ पर डबल बॉन्ड? CH2 और CH के बीच में. फर्स्ट कार्बन पे. फर्स्ट कार्बन पे. हाँ इधर फर्स्ट कार्बन पे और सेकंड में सेकंड कार्बन पे. हाँ बराबर है. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. So what you can see, both are 4 carbon atoms and 8 hydrogen with a double bond. But in the first structure, the double bond is present on first carbon, so it is but1ene. In the second structure, double bond is present on second carbon, so but2ene. So there is a difference in the position of the double bond, and hence the structures are different. There is a difference in the position of the double bond, therefore it is called as functional isomers. Position isomers. So क्या definition बोलना है इसमें यहाँ पर? Compounds having same molecular formula but difference in the position of the functional group. Compounds having same molecular formula but difference in the position of functional group called as position isomers. दो हो गया. तीसरा functional isomers. Functional isomers. If I take C4H9 and OH, C4H9OH, CH3, CH2, CH2, CH2OH. 1, 2, 3, 4. 4 carbon. Hydrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 plus 1, 10. आणि 1 को. बराबर है? 1 इसका ये ड्रॉ कर दिया. 1 यहाँ पर. CH3, CH2, CH2. अब है ना ये CH2 में इधर लेके जाता हूँ. तो क्या हो जाएगा? OCH3. OCH3. तो you can count number of carbon and hydrogen. तो अभी यहां पर क्या है? OH फंक्शनल ग्रुप है. तो क्या कंपाउंड क्या है ये?
अल्कोहल, 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 और यहाँ पर COC. So what is the functional group here? ether, ether. ether, So ether. So compounds having same molecular formula but different, इसको ऐसे लिख सकते हैं C4H10O. Compounds having same molecular formula but different functional group, therefore they are called as functional isomers. Compounds having same molecular formula but different functional group, therefore they are called as functional isomers. Clear? Yes. The fourth one. Metamerism. मेटामेरिज्म में क्या है, अभी हम फोटो निकाल तो फोटो खींचने खड़े हैं, तो जैसे मैं बीच में खड़ा हूं, इधर मीत है, पार्थ है, ठीक है, इधर आसावरी है और पायल ले लेते हैं, पायल है, तो हम ऐसे खड़े हैं, पांचों ने मिलकर इसे फोटो खींचाया, तो हो गया। अब क्या किया, मीत इधर से निकल के इधर आ गया, मीत इधर से निकल के इधर आया, बस वही फोटो खींचा, तो अभी दोनों फोटो क्या है, सेम ही, सब कुछ सेम ही है, बट क्या हो गई, पोजीशन ऑफ मीट हैज बीन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हो, यस यस यस, व्हाट हैपेंड, पोजीशन चेंज हो गई सर। हाँ, पोजीशन मीट की चेंज हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई एम अ टीचर एंड दोनों स्टूडेंट, तो मैं रोल प्ले करूंगा फंक्शनल ग्रुप का और ये दोनों हो जाएंगे अल्काइल ग्रुप, मैं फंक्शनल ग्रुप और ये दोनों अल्काइल ग्रुप, सो पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज चेंज्ड with the same functional group, such is called as metamerism, such is called as metamerism. मतलब क्या देखते हैं, ये लेते हैं, ये वाला एग्जांपल अपन, CH3 CH2 CH2 OCH3, ठीक है, मीत, पायल, आसावरी, और यहाँ पर क्या है, पार्थ। अब क्या हो गया, इसको कंटाल आ गया, इधर चले गया, तो CH3 CH2 O CH2 CH3, so compounds having same molecular formula C4H10O but change in the position of alkyl group across the same functional, sir mic is called as functional isomer, is called as meta, ठीक है, वापस क्या, compounds having same molecular formula, same structural formula, but attachment of alkyl group on either side is different, is called as metamerism. ये कौन सा है, 3 कार्बन में, तो प्रोपाइल और इधर मिथाइल, ये प्रोपाइल ये मिथाइल, इधर इथाइल इथाइल, सो दोनों साइड इथाइल इथाइल है, यहाँ पर प्रोपाइल और मिथाइल है वही है C4H10O, but due to difference in the arrangement of alkyl group is called as metamerism. तो भी मैंने क्या बोला, मैं खड़ा था, मेरे आजू बाजू में दोनों हैं, तो मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना, वो कैसा होना चाहिए, डाइवैलेंट, उसकी 2 वैलेंसी होगी तो ही पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ना, जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो ये नहीं दिखाएगा, एक दफा the compounds, the functional group which are divalent will show metamerism, other will not show metamerism. तो ethers दिखा सकता है, कीटोन दिखा सकते हैं, अल्डिहाइड नहीं दिखाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड मैंने क्या बोला, टर्मिनल पे होता है ना, वैलेंसी 1 है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं दिखाएगा, सो ethers, कीटोन, सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन्स कैन शो, प्राइमरी अमाइन नहीं दिखाएगा, सो कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग डाइवैलेंट, मतलब जिनकी वैलेंसी 2 है वो ही दिखा सकता है, मतलब जिनके पास 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है वही दिखा सकते हैं, सिंगल वाले नहीं दिखा सकते, ठीक है। एंड लास्ट, 5th वन, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रीअरेंजमेंट, टॉटोमेरिज्म का मतलब होता है रीअरेंजमेंट। तो ये मेरे पास यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O CH3 है, कीटोन है मेरे पास, यहाँ पर कीटोन है, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर देते हैं और H यहाँ पर, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, H यहाँ पर, तो मुझे प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, CH3 C, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इधर CH3 था, एक H निकलेगा तो CH2,
और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH। सो कीटोन से क्या बन गया? अल्कोहल। कीटोन से क्या बना? अल्कोहल। क्यों? क्या किया हमने? रीअरेंजमेंट किया। डबल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड और H प्लस मतलब प्रोटॉन। When the rearrangement of a pi bond and a proton, then such isomers are called as tautomers, and the property is called as tautomerism. तो tautomerism के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो pi bond और एक प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो ही ये पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल। ठीक है? So you will read this, learn this, revise this, and I shall stop here. Tata. Bye bye. Thank you. Thank you. सर प्लीज थैंक यू सर, बाय सर। आज क्या क्या कवर किया? आज कवर किया हमने, फर्स्ट टॉपिक कवर किया था बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक। सेकंड कार्बोकैटायन कार्बन आयन। थर्ड रीएजेंट्स कवर किया, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ आइसोमर्स, उसमें दो आइसोमर्स देखे, स्टीरियो एंड स्ट्रक्चरल। स्टीरियो में हमने देखा फिशर एंड न्यूमैन्स एंड सॉहॉर्स। फिर हमने यहाँ पर देखे 5 टाइप्स, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स, 5। और फिर हमने दो फॉर्मूला एक्स्ट्रा देखा था, दैट वाज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड वेज फॉर्मूला। तो इतना सारा आज हमने किया है, 1 घंटे में काफी कुछ अच्छा कर लिया है। सो प्लीज